ఎంఐఎం సీఎం కేసీఆర్ మధ్య మాటల యుద్ధం సభలో వేడి పుట్టించింది. కరోనా వారియర్స్ కు కనీసం సెల్యూట్ కూడా చెప్పలేదని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ ప్రకటన హెల్త్ బులెటిన్ లా ఉందని విమర్శించారు. అక్బర్ ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్న సీఎం కేసీఆర్ అక్బర్ మహాభారతం అంతా చెబుతున్నారంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తాము చెప్పేది మహాభారతం కాదన్నారు. అక్బర్ ప్రసంగం ముగించాలని స్పీకర్ పోచారం కోరడంతో అసహనంతో ప్రసంగం ముగించి వెళ్లిపోయారు ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు. అక్బర్ కు అవకాశం ఇవ్వాలని మద్దతు పలికారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు. Bulletin has been issued. What impact this has left has not been mentioned. Has the corona not impacted the economy? Has the corona not impacted socially? Has the corona not impacted the businesses? Has the corona not impacted the administration? Has the corona not impacted the education? Has the corona not impacted the industries? Has the corona not impacted the agriculture? Has the corona not impacted on the state's finances? Has the corona not impacted on all sections of society? Has the corona not had an impact on all aspects of life? I am so sad to say nothing of that has been mentioned in this. Nothing has been said. Why so much of unseriousness? Sir, when I go through this, when I see all relief measures have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration. Why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers. Why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers. Why didn't you mention in this? You have given money. Why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say. I don't know who's looking after the affairs. We have to look upon this. Through you, sir, I appeal to the member, the health minister thought that the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं. ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है. सुनिए प्लीज. नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ ना. आई एम ओनली सी. अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी? कौन नहीं. ऐसा है. इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? अलग बात है. अलग बात है भाई, अलग बात है. नहीं, स्पीकर सर जो पूछ रहे हैं उनको डिटेल चाहिए. ऑनरेबल मेंबर विल गेट द इंफॉर्मेशन प्लीज. गवर्नमेंट विल सप्लाई द इंफॉर्मेशन. प्लीज अध्यक्ष, इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हम भिजा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये क्यों नहीं कहे, वो क्यों नहीं कहे? वी थॉट जो हेल्थ का मामला है सीरियस है, वो इन्फॉर्मेशन दिए. क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या स्टेप्स लिए, सरकार क्या दवा दिया, क्या इंतजाम करे, उस पर ज्यादा तवज्जो दी. इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, रियासत पे हुआ, कहाँ नहीं हुआ? हर चीज पे हुआ. पूरे तालीमी इदारा बंद है, मेट्रो रेल बंद है. ये पूरा उसमें लिखने का, इसको पूरा अगर लिखते वो 200 पेज का बन जाता. इसीलिए मैं महाभारत कहा उसको. मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है. वो अगर चीजें आपको चाहिए डेफिनेटली आपको दे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है. द ऑनरेबल मेंबर वांट्स दैट दोस डिटेल्स विल बी सप्लाइड. बट ऐसा कि गवर्नमेंट फेल्यूर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए. नहीं, सुनिए प्लीज सुनिए. आप ही बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं ना भाई. आप जो बोले हम भी बोल रहे हैं. स्पीकर सर, इट्स अवर ड्यूटी. सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले आप सुन लिए ना. हम भी तो ठीक है. हमें भी अफसोस है इस बात का कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हमने हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव दिया, ग्राम पंचायत वर्कर को इंसेंटिव दिया, म्युनिसिपल वर्कर को इंसेंटिव दिया, सैलरी उनके बढ़ा के दे रहे, उनकी हिम्मत अफजाई किया. ये सारे कदम हम उठाए. ऐसा है कि हम कुछ करे भी नहीं, बोलने की मीनिंग इसमें से आ जाएगा.
इसलिए मैं कहता हूं, इफ द मेंबर वांट दो डिटेल्स, ऑल द स्टेप्स टेकन इन अदर फ्रंट्स, काफी कुछ हमने किया है। मेंबर खुद कह रहे हैं सर कि आपने पैसे दिया, आपने राशन दिया, आपने माइग्रेंट वर्कर्स को दिया। हम जरूरी इसमें देना करके नहीं समझे, जो क्या दिया दुनिया जानता है, वो तो ऑडिट में बजटेड मनी है, उसका डिटेल हम जब जरूरत पड़े तो दे देंगे। अगर चाहिए मेंबर को तो पूछना चाहिए, लेकिन इस बात को अफसोस इजहार करना, ये ठीक बात नहीं है। मेंबर जो कहना चाहे कहे, वो उनका इंडिपेंडेंस है, वो कह सकते हैं, उनके अपने अलाटेड वक्त में बाज़ाब्ता कहे, हमको एतराज नहीं है। लेकिन एज इफ यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एज इफ इट्स अ गवर्नमेंट फेल्यूर, दैट इज वेयर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। Honorable Speaker, sir, I have never mentioned about the failures or anything. I just said the achievement which has been made by the government do not find a place over here. I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. I don't know. I don't know why is he getting so angry over me and saying Mahabharat when I'm saluting the doctors, when I'm saluting the nurses, when I'm saluting the lab technicians. Am I wrong? I should not. I should not. Speaker sir, if he is trying to play to the galleries, Mr. Akbaruddin Owaisi very intelligently trying to play to the galleries. Who is angry? You salute the doctors. We did not object. Who objected? Who objected? No, who said no? No, don't think that we are as if we are only saluting. We have saluted much earlier. We have shared the sympathies. We have shared the sorrows. We did all that. ऐसा नहीं है कि हम ये तोड़ मरोड़ के बोलने की बात ठीक नहीं है सर. This is not the way. Health bulletin has been issued. What impact this has left?